Hello students, today we are going to discuss about the branches of biology. As you know that whenever we would discuss about the branches of biology, in the first year biology there are different branches and in the 9th class biology there are different branches. So today we will talk about those branches that is included in the 9th class biology. I hope this video will assist you in your future exams. Okay, so we would start about the branches of biology. As you know that if you want to understand about anything, there is some pattern, there is some steps to study about anything. So साइंटिस्ट ने क्या किया कि बायोलॉजी को की मुख्तलिफ शाखें बना दी ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करें तो उसका मेन स्टार्ट कहाँ से लें। जब हम किसी भी लिविंग थिंग के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके पूरे फंक्शंस के बारे में जब जानना चाहते हैं तो बेसिक उसका पैटर्न क्या हो जिसके थ्रू हम उसको स्टडी करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी प्लांट लाइक ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, तो हम अगर किसी प्लांट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ सम स्टेप्स टू नो अबाउट दिस। तो हम स्टार्ट बेसिकली कहाँ से लें, इसलिए साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दी ताकि इनको उन शाखों के थ्रू, उन मेन ब्रांचेस के थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड करें। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। The first one and the most important branch of biology is the morphology. Morphology. Morpho means form. Morpho का मतलब है form. Logy means study. Whenever you would study about the external structure of the living organism, जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसको ज़ाहिरी, उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो हम इसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Whenever you would study about the external structure of living organism, that is called morphology. जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़ाहिरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम उससे कहेंगे दैट इज कॉल्ड morphology. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्लांट और देयर इज़ एन एनिमल। फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल्स के आप आइज़ की स्टडी करें, उसकी स्किन की स्टडी करें, उसका शेप कैसा है, उसका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, जब आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। एंड सेकेंड वन ब्रांच दैट इज द एनाटॉमी। ओके, सेकेंड वन ब्रांच इज द anatomy. Anatomy means study of internal structure of the living organism, of living thing. Whenever you would study the internal structure of living organism, that is called anatomy. For example, मेरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, जब आप स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर of living thing, that is called anatomy. Okay, now third one branch of biology, that is the taxonomy. Taxonomy. What is taxonomy? जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने इससे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी किया कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से समझना है हमने, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की स्टडी करें, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो, तो हम इसको कहेंगे दैट इज द टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
living organisms. Is it clear? Okay, now the fourth one branch of biology is the physiology. Physiology. Maybe there is the change in the sequence of these branches. ऊपर नीचे अगर branches हो रही हैं, इसका कोई problem नहीं है. You have to best know the basic concept. You have to know the basic definition of any branch of the biology. Now the fourth one branch is the physiology. Whenever you would study the internal parts of living organism, their functions. For example, I have a kidney, I have a liver, I have a stomach. Whenever I would study the function of any internal part of any living organism, that is called physiology. Study of functions of internal parts of living thing. That is called physiology. Now the fifth one branch is the histology. Histology. What is histology? Histology means study of tissue. For example, I have any plant, I have any animal, I would take their tissue and examine it, observe it on the slide with the help of microscope. Whenever I would study the structure, function, characteristics of any tissue. As you know that जो plants हैं, animals हैं, वो tissues के बने हुए होते हैं. तो इन tissues की study को हम कहेंगे histology. Study of tissue is called histology. Is it clear? Now the sixth one branch is the cytology. Cyto means cell. Whenever you would study the structure, composition, properties, characters, functions of cell, जब आप किसी भी cell के बारे में पूरी नॉलेज, वाइड स्प्रेड नॉलेज हासिल करेंगे, जब किसी भी सेल के जो है ना स्ट्रक्चर को, फंक्शन को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, तो हम उससे कहेंगे साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल. आई एम राइटिंग ओनली सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइटोलॉजी. there is a definition of cytology is that the structure, properties and functions of cell. Okay, now the seventh branch is the embryology. Okay, do you know about that? What is the embryology? In the next classes, inshallah, we will discuss in detail about the embryo. What is embryo? What is the fertilization? In our further lectures, I will shed a light on these topics. Okay, embryology. What is embryology? Whenever sperm of male and ovum of female fuse, they form a zygote. They form an embryo. Whenever you would study about the developments which occur in the embryo, that is called embryology. जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम आपस में कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है. जब आप उस एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें, तो हम उसको कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. जो डेवलपमेंट्स एम्ब्रियो के अंदर होती है, जो मुख्तलिफ फंक्शंस एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, किन किन स्टेजेस से एम्ब्रियो गुजरता है, जब आप उसकी स्टडी करेंगे हम उसे कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. ओके, सो दीज आर द 7 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. नाउ द 8th one branch of biology is paleontology. What is the paleontology? A study of fossils is called paleontology. A study of fossils is called paleontology. What is the fossils? The remains of ancient things. मसलन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो चुके हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुरू में पाए जाते थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं, उनके निशानात, उनके रिमेन्स, बची हुई जो निशानात हैं, जब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स. जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में साइंस ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले ज़मीन पर डायनासोर्स पाए जाते थे.
कैसे मालूम है उनको? ये उनके फॉसिल्स से, उनके पुराने रिमेन्स से, उनके निशानात से उनको पता चला कि डायनासोर्स भी जो है ना वो पाए जाते हैं। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इट मीन्स दैट इज कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी। इज इट क्लियर? नाइन्थ वन ब्रांच इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ environment and their relationship with other living organisms. What is ecology? माहौलियात के बारे में स्टडी करना, माहौल के बारे में स्टडी करना, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, लेकिन उस इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। मीन्स वो माहौल, वो इन्वायरमेंट किस तरह दूसरे लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है। जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसे कहा जाएगा इकोलॉजी। ओके, नाउ द 10th वन ब्रांच दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। Chemistry. What is the biochemistry? Bio means life, chemistry, chemicals. Those biochemicals are chemical reactions which occurs inside the living organisms. आपको पता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना उसे कहा जाएगा बायोकेमिस्ट्री। मीन्स बायो केमिकल reactions occurs in the living organisms. बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, केमिकल एस्पेक्ट्स जो है, जो एक केमिकल एस्पेक्ट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में स्टडी करना उसे कहा जाएगा बायोकेमिस्ट्री। 11th वन ब्रांच इज Biotechnology. What is the biotechnology? Bio means life, technology means technique. Technique of life is called biotechnology. Technique of life is called biotechnology. What is the meaning of technique of life? As you know that कि बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, कई फंजाई हार्मफुल होते हैं, कई फंजाई बेनिफिशियल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक को जो कहा जाता है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग सेल्स को, बैक्टीरिया के सेल्स हों चाहे वो फंजाई के सेल्स हों, उनके सेल्स को यूज़ करके उसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना, इसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह मेडिसिन्स, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स फंजाई से और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। 12th वन ब्रांच इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इट इज सिंपल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। जब आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स whom you cannot see with your naked eye, that is called microbiology. What is microbiology? Study of microorganisms is called microbiology. Now 13 number branch, that is the last one, that is the genetics. What is genetics? A study of genetical aspects of living organisms. As you know that living thing have a nucleus. Every living cell have a nucleus. Inside the nucleus there is a DNA is present. Inside the DNA there is the genes are present who have the character information, who has the hereditary characters. So जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिकल एस्पेक्ट्स को, उनके जीन्स की स्टडी करेंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे जेनेटिक। स्टडी ऑफ जेनेटिक material, study of genetic material is called genetics. Is it clear? So these are the 13 branches of biology. Hope you clearly understand the branches of biology. In the next video we will discuss about the level of organization. Thank you.